What is called thinking by Martin Heidegger. मार्टिन हाइडेगर एक जर्मन फिलोसोफर थे और उनका ये जो पूरा हम अभी बुक पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ कॉल्ड थिंकिंग इज़ बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट लेक्चर्स जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में दिए थे. सो द फर्स्ट लेक्चर टॉक्स अबाउट, अगर मैं आपको एक समरी दूँ तो मार्टिन हाइडेगर यही कहते हैं कि वी डोंट नो हाउ टू थिंक येट. हमें लग रहा है कि हम सोच रहे हैं, बट हमें अभी सोचना भी सीखना होगा. हाउ टू थिंक, वी नीड टू लर्न टू थिंक. एंड देन ह्यूमन्स आर केपेबल, ह्यूमन्स के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो सोच सके, बट स्टिल वी डोंट नो हाउ टू थिंक येट. We came to know what it means to think when we ourselves try to think. If the attempt is to be successful, we must be ready to learn thinking. That is what is important here. कि हमें तैयार रहना पड़ेगा और सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वी आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग. एंड सेकेंडली वी विल हैव टू बी रेडी कि अब हमें सोचना सीखना पड़ेगा. As soon as we allow ourselves to become involved in such learning, we have admitted that we are not yet capable of thinking. तो जैसे ही हमने एडमिट कर लिया कि now we are ready कि हम अब सोचना सीख सकते हैं, that means we have admitted कि हम अभी तक सोचना नहीं जानते हैं. Yet man is called the being who can think, and rightly so. Man is the rational animal. Reason ratio evolves in thinking. Being the rational animal, man must be capable of thinking if he really wants to. Still, it may be that man wants to think but can't. So man एक rational animal, being a rational animal, of course all of the different animals, elephants, tigers, including man, are animals. But how man is different from these animals is that man can think. Man is a rational animal. And हम लोग उसकी तरफ इंक्लाइंड है. हम लोग सोचना चाहते हैं बट हम लोग सोच नहीं रहे हैं. वी वॉन्ट टू थिंक बट वी आर नॉट डूइंग दैट. Being the so perhaps still it may be that man wants to think but he can't. Perhaps he wants too much when he wants to think and so can do too little. Man can think in the sense that he possesses the possibility to do so. तो हम लोगों को ये पता है कि हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी है, हम लोग इतने एबल है कि वी कैन थिंक. हम ये बात जानते हैं हमारे बारे में, वी नो दिस मच कि दैट वी कैन थिंक. हमारे पास ये एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है कि हम सोच सकें, बट वी आर नॉट येट डूइंग इट. For we are capable of doing only what we are inclined to do. And again, we truly incline only towards something that in turn inclines toward us, toward our essential being, by appealing to our essential being as the keeper who holds us in our essential being. What keeps us in our essential nature holds us only so long, however, as we for our part keep holding on to what holds us. तो हम लोग सोचने की तरफ इंक्लाइंड क्यों हैं? द रीज़न दैट वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स थिंकिंग इज़ बिकॉज थिंकिंग हमारे इसेंशियल नेचर का एक पार्ट है. थिंकिंग एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी कैपेबिलिटी है जो हमें बाकी एनिमल्स से अलग बनाती है. सो इसीलिए हम लोग थिंकिंग की तरफ इंक्लाइंड है, क्योंकि ये हमारा इसेंशियल नेचर का पार्ट है. हमारा इसेंशियल नेचर जो है वो हमें बाकी एनिमल्स से अलग बनाता है. एंड वी कीप होल्डिंग ऑन टू इट बाय नॉट लेटिंग इट आउट ऑफ आर मेमोरी. मेमोरी इज़ द गैदरिंग ऑफ थाट्स. तो सबसे पहला हमें मिल जाता है कि मेमोरी क्या है. इज़ द गैदरिंग ऑफ थाट की बहुत सारे थाट्स को जब हमने गैदर करके स्टोर कर लिया, दैट इज़ व्हाट इज़ मेमोरी. थॉट ऑफ व्हाट? Thought of what holds us in that we give it thought precisely because it remains that must be thought about. Thought has the gift of thinking back, a gift given because we incline toward it. तो thought के पास एक gift होता है to thinking back का गिफ्ट. थिंकिंग बैक का मतलब है कि अगर हमें एक थॉट आया तो हम वापस से उस थॉट पे और थॉट्स आ सकते हैं, या हमें जो थॉट आया हम उसी के ऊपर और थिंक कर सकते हैं कि ओके वी थॉट ऑफ समथिंग लाइक दिस, तो इस पे क्या है, तो वी हैव दैट कि हम उस एक सिंगल थॉट को ही बहुत समय तक सोच सकते हैं, उसके ऊपर थिंक कर सकते हैं. Only when we are so inclined toward what in itself is to be thought about, only then we are capable of thinking. तो द मेन थिंग जो यहाँ पर वो कहते हैं इज़ दैट वी आर सो ओनली व्हेन वी आर सो इंक्लाइंड टूवर्ड व्हाट इन इटसेल्फ इज़ टू बी थॉट अबाउट. हम लोग सोचने की तरफ तो इंक्लाइंड है, लेकिन क्या सोचना है, हमें उस सोचने की तरफ इन्वॉल्व होना चाहिए जिसे हमें सोचना चाहिए. व्हाट हैज़ टू बी थॉट अबाउट, जो हमें सोचना चाहिए, अगर हम उसकी तरफ इंक्लाइन होंगे तभी हम लोग करेक्टली केपेबल होंगे टू थिंक. In order to be capable of thinking, we need to learn it first. What is learning? Man learns when he dispossesses everything he does so that it answers to whatever essentials are addressed to him at any given moment. तो हमें सबसे पहले सोचना होगा.
लर्न करना होगा टू थिंक. एंड हाउ डज वन लर्न? एक इंसान तभी सीखता है जब एक गिवन मोमेंट पे उसको जो भी नेसेसिटी होती है, जो इसेंशियल होता है, उसको जिस स्किल का यूज़ करना होता है, वो बाकी सब छोड़ के उस स्किल को हासिल करने में लग जाता है. दैट इज़ व्हाट लर्निंग इज़. What is essential in a friend, for example, is we learn to think by giving our mind to what there is to think about. So the only way जब हम capable होंगे thinking के, जब हम थिंक करना सीखेंगे, वो तब है कि जब हम वो चीज़ की तरफ सोचने के लिए इंक्लाइंड हो जो एक्चुअल में हमें सोचना चाहिए, which should be thought by us. What is essential in a friend, for example, is what we called friendly. In the same sense, we now call thought-provoking one itself is to be thought about. तो जैसे कि एक फ्रेंड के साथ क्या क्वालिटी होनी चाहिए? When do you call a person a friend? हम एक इंसान को अपना फ्रेंड तब बोलते हैं जब उसमें फ्रेंडलीनेस वाली वो कैरेक्टरिस्टिक होती है. फ्रेंडलीनेस इज़ नॉट एज एन एडजेक्टिव हम यहाँ पर यूज़ करें कि ओके वो बहुत फ्रेंडली है, वो इतना फ्रेंडली नहीं है. बट फ्रेंडली मतलब कि व्हेन देर आर, वो फ्रेंडली के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ओके यू नो द पर्सनस नेम, यू टॉक टू द पर्सन फ्रीक्वेंटली, आप उससे बात करते हैं, आपको जानते हैं, वो आपकी हेल्प करता है, आप उसकी हेल्प करते हैं, तो वो फ्रेंडली वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है. तभी एक स्ट्रेंजर को आप फ्रेंड बुलाते हैं. उसी तरीके से क्या चीज़ है, थॉट्स तो हमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए वो है थॉट प्रोवोकिंग. थॉट प्रोवोकिंग वो चीज़ है जिसके बारे में हमें एक्चुअली में सोचना चाहिए. तो जिस चीज़ के बारे में वी हैव टू थिंक अबाउट, वी शुड बी थिंकिंग अबाउट, उसे कहा गया है थॉट प्रोवोकिंग. एवरीथिंग थॉट प्रोवोकिंग गिव्स अस टू थिंक, बट इट ऑल्सो गिव्स अस दैट गिफ्ट जस्ट सो फार एज अ थॉट प्रोवोकिंग मैटर ऑलरेडी इज इंट्रिंसिकली वॉट मस्ट बी थॉट अबाउट. From now on, we will call most thought-provoking what remains to be thought about always, because it is at beginning before all else. तो थॉट प्रोवोकिंग वो चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और उसमें से भी मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग वो चीज़ है जिसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए, कि जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले जो आता है वो हो गई हमारी मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग चीज़. What is most thought provoking? How does it show itself in our thought provoking time? Most thought provoking is that we are still not thinking. तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग चीज़ जिसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए वो ये फैक्ट है कि हम अभी भी सोच नहीं रहे हैं. वी आर नॉट थिंकिंग. और ये चीज़ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट वी हैव टू लर्न टू थिंक. हमें सोचना है, हमें सोचना पड़ेगा. सो द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग चीज़ जो हमेशा हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए बिफोर एनी अदर थॉट प्रोवोकिंग थिंग, उसमें से मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग चीज़ इस बात को रियलाइज़ करना है कि वी आर स्टिल नॉट थिंकिंग. नॉट इवन येट, although the state of the world is becoming constantly more thought-provoking. True, this course of events seem to demand rather than man should act without delay, instead of making speeches at conferences and international conventions and never getting beyond proposing ideas on what ought to be done, how it ought to be done. What is lacking then is action, not thought. तो अब द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इट इज़ बिकमिंग मोर थॉट प्रोवोकिंग. हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर अगर इतने सब के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद हमें एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने थॉट थिंकिंग वाला पार्ट कर लिया है. कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में आइडियाज डिस्कस कर लिए. नाउ व्हाट इज़ नीडेड इज़ एक्शन, उनको इम्प्लीमेंट करना. And yet, it could be that prevailing man has for centuries now acted too much and thought too little. तो हमें लगता है कि दीज कॉन्फ्रेंसेज, दीज सेमिनार्स, हमने बहुत कुछ थिंक कर लिया, अब तो हमें एक्शन की कमी है, हमें उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकल लाइफ में. लेकिन अभी तक इफ़ वी सी द ट्रेंड टिल नाउ, ह्यूमन्स हैव डन टू मच एंड थॉट टू लिटिल. बहुत कुछ काम कर दिया है. आप देखिए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो गए हैं, एडवांसमेंट्स हो गए हैं साइंस में, मेडिसिन में, आर्ट में, इन एवरी फील्ड वी कैन थिंक ऑफ, ब्यूटी, फैशन, वॉट एवर. हमने बहुत काम कर लिया है, लेकिन हमने सोचा बहुत कम है. वी हैवंट थॉट अबाउट वॉट नीड्स टू बी थॉट अबाउट. बट हाउ डेयर anyone assert today that we are still not thinking today, when there is everywhere a lively and constantly more audible interest in philosophy, when almost everybody claims to know what philosophy is all about. So now what here in this part he is doing is he is justifying कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि वी आर नॉट थिंकिंग, हमें सोचने की ज़रूरत है, तो वो अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं. बिकॉज एनीबडी वुड काउंटर कि यू आर सेइंग हमने सोचा नहीं, हमने थिंक नहीं, देन व्हाट इज ऑल दिस.
और वो ही हिमसेल्फ इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल कि आज के टाइम में तो हर कोई बोलेगा कि हम सभी सोच रहे हैं, सभी को पता है फ़िलॉसफी क्या है, हर कोई फ़िलॉसफी के बारे में बातें करता है। नॉट ओनली फ़िलॉसफी, हमारे इतने एडवांसमेंट्स हुए हैं, इतने टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए, सब कुछ हो रहा है और ये सब बिना सोचे तो नहीं हो सकता है। वी हैव थॉट अबाउट इट फर्स्ट, उसके बाद ही हमने उसको एक्शन में लेकर आए। Philosophers are the thinkers par excellence. They are called thinkers precisely because thinking properly takes place in philosophy. तो फिलोसोफर्स को थिंकर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सही तरीके से कैसे सोचना है वो हमें फिलोसफी सिखाती है. Nobody will deny that there is an interest in philosophy today, but is there anything at all left today in which man does not take an interest in the sense in which he understands interest? सो नाउ अब बोल रहे हैं वो, नाउ ही इज़ मतलब ही इज़ गिविंग जस्टिफिकेशन, वो दे रहे हैं कि एवरीबडी विल से कि हर जगह फिलोसफी पढ़ी जा रही है और फिलोसोफर तो सबसे बेस्ट थिंकर्स होते हैं, फिलोसफी में सही तरीके से सीखने सोचने को मिलता है एंड हर कोई फिलोसफी, बहुत सारे लोग फिलोसफी पढ़े मतलब वी आर लर्निंग वेल. लेकिन ही सेज दैट द प्रॉब्लम इज़ कि फ़िलोसफी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है लेकिन कोई और चीज़ मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है आज के टाइम में जिसमें इंसान का इंटरेस्ट नहीं है. द मैन इज़ इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग, क्योंकि मैन को सबसे पहले इंटरेस्ट का मतलब भी पता है, व्हाट इंटरेस्ट एक्चुअली मीन्स. इंटरेस्ट, इंटरेसे मीन्स टू बी अमंग एंड इन द मिड्स ऑफ थिंग्स और टू बी एट द सेंटर ऑफ अ थिंग एंड टू स्टे विद इट. तो हमारा इंटरेस्ट होना मतलब कि बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में एक चीज़ हमारा सेंटर होना, कि अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो वो चीज़ बाकी सभी चीज़ों बाकी सभी चीज़ें उस एक चीज़ के आसपास घूमेगी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, वो चीज़ आपका सेंटर होगी एंड आपकी पूरी लाइफ उस सेंटर के आसपास घूमेगी. बट टुडेज इंटरेस्ट एक्सेप्ट्स एज वैलिड ओनली व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग. सो दिस इज़ द डिफरेंस वो जो बता रहे हैं लोगों के बीच में कि इंटरेस्ट क्या होता है. इंटरेस्ट वो है जो एक इंसान की लाइफ का सेंटर पॉइंट होता है जिसके आसपास हम हमारी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं. लेकिन आज के समय में हम ये बोल सकते हैं कि फ़िलॉसफी पढ़ी जा रही है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, बट एक्चुअली में इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं पता है. इंटरेस्ट का मतलब वो होता है कि वो हमारे सेंटर में, लेकिन आज के समय में इंटरेस्टिंग हम क्या देख रहे हैं कि जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ही हमारे लिए एक इंटरेस्ट हो गई, विच इज़ रॉन्ग. अ थिंग बीइंग इंटरेस्टिंग और वो हमारा इंटरेस्ट होना आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. तो फिलॉसफी के भी वो पार्ट्स जो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, इंसान सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम लोग उसको पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं. तो फिलॉसफी पढ़ी तो जा रही है लेकिन नॉट द वे दैट इट शुड बी, कि वो जिस तरीके से इंसान का इंटरेस्ट होना चाहिए उस तरीके से उसे नहीं पढ़ा जा रहा है. And interesting is the sort of thing that can freely be regarded as indifferent the next moment and be displaced by something else, which then concerns us just as little as what went before. तो कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग आज है, कल आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, कल आपको बोरिंग लगे, तो उसको आप बहुत आसानी से डिसमिस कर सकते हो. सो अभी जो लोग फ़िलॉसफी पढ़ रहे हैं वो लोग फ़िलॉसफी को इंटरेस्टिंग समझ रहे हैं, बट फ़िलॉसफी उनका इंटरेस्ट नहीं है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं सोच रहे हैं. Many people today take the view that they are doing great honor to something by finding it interesting. तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे उनको फिलोसफी इंटरेस्टिंग लगता है मतलब कोई बहुत ही महान भी बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहे हैं. But that is not true. The truth is that such an opinion has already relegated the interesting thing to the ranks of what is indifferent and soon boring. तो अगर आप मान रहे हो कि फ़िलॉसफी इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब आप कुछ नहीं, बस आप फ़िलॉसफी को आज इंटरेस्टिंग समझ के वेरी वेल पॉसिबल कि कल आप उसको बोरिंग समझो, इतना बोरिंग कि वो आपके लिए कोई मायने ही ना रखे. It is no evidence of any readiness to think that people show an interest in philosophy. There is, of course, serious preoccupation everywhere with philosophy and its problems. The learned world is expending commendable efforts in the investigation of the history of philosophy. These are useful and worthy tasks, and only the best talents are good of great thinking. Are good enough for them, especially when they present to us models of great thinking. But even if we have devoted many years to the intensive study of the treatises and writings of the great thinkers, that fact is still no guarantee that we ourselves are thinking or even are ready to learn thinking. On the contrary, preoccupation with philosophy more than anything else may give us a stubborn illusion that we are thinking just because we are incessantly philosophizing. तो ये बात है, many people are studying philosophy, हम great philosophers का वर्क पढ़ रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोगों का मतलब लोग इंटरेस्टिंग समझ रहे हैं फ़िलॉसफी को, उसकी थ्योरीज़ को समझ रहे हैं. लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ये सिर्फ हमें एक फॉल्स इल्यूजन दे रहा है, हमें सिर्फ एक इल्यूजन दे रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग फ़िलॉसफाइजिंग कर रहे हैं. बट
सिर्फ फ़िलोसफी के वर्क्स को पढ़ लेना, ट्रीटिसीज़ को पढ़ लेना, उनकी स्टडी कर लेना का मतलब ये नहीं है कि वी आर एक्चुअली थिंकिंग. Even so, it remains strange and seems presumptuous to assert that what is thought most thought-provoking is our thought-provoking time is that we are still not thinking. Accordingly, we must prove the assertion. Even more advisable is first to explain it, for it could be that the demand for a proof collapses as soon as enough light is shed on what the assertion says. It runs most thought provoking in a thought provoking time is that we are still not thinking. अब हमें इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग चीज़ हमारे थॉट प्रोवोकिंग टाइम में ये है कि हम अभी भी थिंक नहीं कर रहे हैं. It has been suggested earlier how the term thought provoking is to be understood. Thought provoking is what gives us to think. तो thought provoking क्या है? ऐसी कोई चीज़, thought provoking is something जो हमें सोचने के लिए कुछ देती है. Let us look at it closely and from the start allow each word its proper weight. Some things are food for thought in themselves, intrinsically, so to speak, innately. And some things make an appeal to us to give them thought, to turn toward them in thought, to think them. तो थॉट प्रोवोकिंग चीज़ क्या है? फूड फॉर थॉट, जो हमें सोचने के लिए कुछ देता है. और फूड फॉर थॉट एक वो चीज़ है जिसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि वो हमें सोचने के लिए कुछ मटेरियल दे रहा है. तो फूड फॉर थॉट की बेसिक इसेंशियल नेचर ही यही है कि वो हमें सोचने के लिए मटेरियल दे रहा है. What is thought provoking, what gives us to think, is then not anything that we determine, not anything that only we are instituting, only we are proposing. According to our assertion, what of itself gives us most to think about, what is most thought provoking is that we are still not thinking. तो थॉट प्रोवोकिंग ये जैसे कि हमारे लिए फूड फॉर थॉट क्या है? ये वी आर नॉट थिंकिंग, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इनेट वैल्यू है कि हम लोग सोच नहीं रहे. और ये ही इसका इसेंशियल नेचर, दिस वेरी फूड फॉर थॉट जो है कि वी आर स्टिल नॉट थिंकिंग, इसका इसेंशियल नेचर ही है कि इट इज़ गिविंग अस मटीरियल टू थिंक अबाउट. This now means we still have not come face to face, have not yet come under the sway of what intrinsically desires to be thought about in an essential sense. इसका मतलब हम अभी तक किसी भी ऐसे चीज़ से नहीं मिले हैं, किसी भी ऐसे चीज़ को नहीं जानते जिसका essential nature, intrinsic nature ही है to give something to think about. Presumably, the reason is that we human beings do not yet sufficiently reach out and turn toward what desires to be thought. और इसका एक रीज़न हो सकता है कि अभी तक हम ह्यूमंस ने उस चीज़ तक रीच आउट ही नहीं करा है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए. If so, the fact that we are still not thinking would merely be a slowness, a delay in thinking, or at most a neglect on man's part. Such human tardiness could then be cured in human ways by the appropriate measures. Human neglect would give us food for thought, but only in passing. The fact that we are still not thinking would be thought-provoking, of course, but being a momentary and curable condition of modern man, it could never be called the one most thought-provoking matter. तो वी आर नॉट थिंकिंग ये वाली जो चीज़ है, ये मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग मैटर हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दिस कैन बी क्योरेबल, हम इसको क्योर कर सकते हैं. वी आर स्टिल नॉट थिंकिंग is a most thought provoking thing, but then this again ये एक मोमेंटरी कंडीशन है. हम इसको चेंज कर सकते हैं कि हम कोई ऐसे मटेरियल को सोचने लगे, हमें कोई ऐसे मटेरियल मिल जाए जिसका इंट्रिंसिक नेचर है टू बी द फूड फॉर थॉट, और हम उसको सोचने लग गए, देन दिस कंडीशन विल बी चेंज कि वी आर नॉट थिंकिंग. तो ये जो मोस्ट प्रोवोकिंग थिंग हमने बात की है कि वी आर स्टिल नॉट थिंकिंग इज़ अ मोमेंटरी थिंग जिसको चेंज किया जा सकता है. एंड दिस दैट वी आर स्टिल नॉट थिंकिंग, ये सिर्फ एक ह्यूमन डिले हो सकता है. इट्स वेरी वेल अ ह्यूमन डिले कि हम लोग सिर्फ अभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए. तो सिर्फ एक ये ह्यूमन डिले है जिसको हम वेरी वेल चेंज कर सकते हैं. Yet that is what we call it, and we suggest thereby the following, that we are still not thinking is by no means only because man does not yet turn sufficiently toward that which by origin and innately wants to be thought about, since in its essence it remains what must be thought about. Rather, that we are still not thinking stems from the fact that the thing itself that must be thought about turns away from man, has turned away long ago. तो नाउ वी हैव टू रियलाइज़ द फैक्ट कि जिस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए ना, इट हैज़ टर्न्ड अवे फ्रॉम मैन. उसका नेचर है टू टर्न अवे फ्रॉम मैन, मैन से दूर जाने का उसका नेचर है. लाइक हमने ये पहले भी पढ़ा है इन हेराक्लाइटस दैट द ट्रूथ हैज़ द एबिलिटी टू हाइड इट सेल्फ. ट्रूथ अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है और हमें उसको रिवील करना होता है. वी विल वॉन्ट टू नो एट वंस व्हेन दैट इवेंट टुक प्लेस.
Even before that, we will ask still more urgently how we could possibly know of any such event. And finally, the problems which here lie in wait come rushing at us when we add still further. That which really gives us food for thought did not turn away from man at some time or other, which can be fixed in history. No, what really must be thought keeps itself turned away from man since the beginning. तो ये कोई एक मोमेंट या एक इवेंट नहीं हिस्ट्री में हुआ है कि इस डेट पर ये चीज़ जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए वो मैन से दूर जाती गई, मैन से अपने आप को उसने टर्न अवे कर लिया, अपने आप को छुपाने लगा. ये कंडीशन सिचुएशन इज़ फ्रॉम द बिगनिंग. शुरुआत से ये उस चीज़ की प्रॉपर्टी रही है कि वो जो है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा, अपने आप को ह्यूमन से दूर जाने की कोशिश करेगा. On the other hand, in our era, man has always thought in some way. In fact, man has thought the profoundest thoughts and entrusted them to memory. By thinking in that way, he did and does remain related to what must be thought. And yet, man is not capable of really thinking as long as that which must be thought about withdraws. तो हमारे टाइम में many people have done thinking, a lot of thinking, lot of great thinking. हमें कुछ बहुत ही अच्छा और important material भी मिला है, लेकिन जब तक वो चीज़ जिसके बारे में हमें एक्चुअली सोचना चाहिए वो हमसे विथड्रॉ हो रहा है, वो हमसे छुप रहा है, जब तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक वी आर नॉट केपेबल ऑफ थिंकिंग एंड वी आर नॉट थिंकिंग. If we, as we are here and now, will not be taken in by empty talk, we must retort that everything set so far in an unbroken chain of hollow assertions and state besides that which has been presented here has nothing to do with scientific knowledge. तो हम जो बार बार बोल रहे हैं ना कि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट, इसका साइंटिफिक नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है. इट्स नॉट दैट कि हम साइंटिफिकली कोई चीज़ को नहीं सोच रहे हैं. इट विल बी वेल टू मेंटेन एज लॉन्ग एज पॉसिबल सच अ डिफेंसिव एटीट्यूड टुवर्ड what has been said. Only in that attitude do we keep the distance needed for a quick running dash by which one or the other of us may succeed in making leap into thinking. For it is true that what was said so far and the entire discussion that is to follow have nothing to do with the scientific knowledge, especially not if the discussion itself is to be a thinking. तो जब हम बार बार बोल रहे हैं कि वे नॉट थिंकिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्योंकि साइंटिफिकली कोई चीज़ नहीं सोच रहे हैं या हम साइंस की बात नहीं कर रहे, दैट मीन्स वी आर नॉट थिंकिंग. इसका थिंकिंग का साइंटिफिक नॉलेज से इतना नहीं लेना देना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसेंशली थिंकिंग के बारे में. This situation is grounded in the fact that science itself does not think and cannot think, which is its good fortune, here meaning the assurance of its own appointed course. So now he is criticizing even science कि science सोच ही नहीं सकता है. Science does not have the capability and the capacity to think. Science does not think. This is a shocking statement. Let the statement be shocking even though we immediately add the supplementary statement that nonetheless science always and in its own fashion has to do with thinking. तो साइंस डज नॉट थिंक, लेकिन इट हैज़ टू डू समथिंग विथ थिंकिंग. साइंस नहीं सोचता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं थिंकिंग से रिलेशन ज़रूर है. दैट फैशन हाउएवर इज जेन्युइन एंड कॉन्सिक्वेंटली फ्रूटफुल ओनली आफ्टर द गल्फ इज बिकम विजिबल दैट लाइज बिटवीन थिंकिंग एंड द साइंसेज लाइज देयर अनब्रिजेबली. देयर इज नो ब्रिज हियर, ओनली द लीप. Hence, there is nothing but mischief in all the makeshift ties and asses bridges by which men today would set up a comfortable commerce between thinking and the sciences. तो थिंकिंग और साइंसेस के बीच में इतना कोई ब्रिज है ही नहीं, कोई कनेक्शन है ही नहीं. मैन एक लीप ले लेता है, बस एक जंप ले लेता है फ्रॉम थिंकिंग टू डायरेक्टली साइंस. वो कहता है कि कनेक्शन है, एक ब्रिज है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है. Hence, we, those of us who come from the sciences, must endure what is shocking and strange about thinking, assuming we are ready to learn thinking. To learn means to make everything we do answer to whatever essentials address in themselves to us at the given moment. It is in order to be capable of doing so, we must get underway. It is important above all that on the way on which we set out when we learn to think, we do not deceive ourselves and rashly bypass the pressing questions. On the contrary, we must allow ourselves to become involved in questions that seek what no inventiveness can find. Especially we moderns can learn only if we always unlearn at the same time. Applied to the matter before us, we can learn thinking only if we radically unlearn what thinking has been traditionally. To do that, we must at the same time come to know it. तो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें वी हैव टू लर्न थिंकिंग, हमें अनलर्न करना पड़ेगा जिसको हम मानते आए हैं द ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली थिंकिंग. तो हमें उस ट्रेडिशनल वे को सबसे पहले अनलर्न करना पड़ेगा, तभी हम करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग के बारे में करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग को लर्न कर पाएंगे. We said man still does not think, and this because what must be thought about turns away from him, by no means only because man does not sufficiently reach out and turn to what is to be thought.
वॉट मस्ट बी थॉट अबाउट टर्न्स अवे फ्रॉम मैन। तो ये नहीं है कि मैन अभी तक उस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुँचा, वो तो है, बट उस ऑब्जेक्ट का जिसके बारे में सोचना चाहिए उसका भी इसेंशियल नेचर है कि टर्न्स अवे फ्रॉम मैन, इट विथड्रॉज फ्रॉम हिम। बट हाउ कैन वी हैव द लीस्ट नॉलेज ऑफ समथिंग दैट विथड्रॉज फ्रॉम द बिगनिंग, हाउ कैन वी इवन गिव इट अ नेम। तो अगर कोई चीज़ शुरुआत से, इट इज़ नॉट बीन कि बहुत समय तक वो हम था और फिर एक कोई इवेंट हुआ जिसके बाद से वो विदड्रॉ होने लगा, उसकी शुरुआत से इसेंशियल नेचर आए कि इट विदड्रॉज फ्रॉम मैन, इट गोज़ अवे फ्रॉम मैन। तो फिर हम ऐसी किसी चीज़ को हाउ डू वी आइडेंटिफाई इट, हाउ डू वी इवन गिव इट अ नेम जब वो इसेंशियली शुरुआत से हमसे दूर जाते रहा है। Whatever withdraws refuses arrival, but the withdrawing is not nothing. Withdrawal is an event. In fact, what withdraws may even concern and claim man more essentially than anything present that strikes and touches him. तो वो उस विथड्रॉल को समझाने की कोशिश करें कि जो भी चीज़ मैन से विथड्रॉ होती है मतलब वो उसका अराइवल नहीं है, वो हम तक नहीं आ रहा है, लेकिन ये विथड्रॉ जो हो रही है, ये विथड्रॉइंग भी एक पूरा कंप्लीट इवेंट है। बीइंग स्ट्रक बाय एक्चुअलिटी इज what we like to regard as constitutive of the actuality of the actual. However, in being struck by what is actual, man may be debarred precisely from what concerns and touches him in the surely mysterious way of escaping him by its withdrawal. The event of withdrawal could be what it is most present or in all our present, and so infinitely exceed the actuality of everything actual. तो जो भी चीज़ें हमें लगती है आज रियल है, आज एक्चुअल है, उन सबसे ज़्यादा एक्चुअल चीज़ होगी ये चीज़ जो हमसे विथड्रॉ कर रही है। सो ये जो उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का, मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग ऑब्जेक्ट का, जिस द थिंग दैट हैज़ टू बी थॉट अबाउट का विथड्रॉइंग नेचर है, दिस विथड्रॉइंग इज़ एन इवेंट जो कि सबसे एक्चुअल है, बिकॉज ये हमेशा से इवेंट रहा है, ये चलते आया है। What withdraws from us draws us along by its withdrawal, very withdrawal, whether or not we become aware of it immediately or not at all. Once we are drawn into the withdrawal, we are drawing toward what draws, attracts us by its withdrawal. And once we, being so attracted, are drawing toward what draws us, our essential nature already bears the stamp of drawing toward. As we are drawing toward what withdraws, we ourselves are pointers pointing toward it. तो ये जैसे कि अगर उस ऑब्जेक्ट का नेचर है कि इट विड्रॉज फ्रॉम अस, इट टर्न्स अवे फ्रॉम अस, तो ये हमारा भी नेचर है दैट वी गो टूवर्ड्स दैट, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वी पॉइंट टूवर्ड्स इट, और वो हमारा उसकी तरफ जाना, उस चीज़ को फॉलो करना इज़ द वेरी फैक्ट कि हम उस ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज कर सकते हैं। We who are pointing in that direction, not like an incidental adjunct, but as follows. This drawing toward is in itself an essential and therefore constant pointing toward what withdraws. To say drawing toward is to say pointing toward what withdraws. तो हम we are drawing towards the thing जो कि खुद अपने आप को हमसे withdraw कर रहा है, तो we are pointing in the direction, उस direction में जो हमें हमसे withdraw हो रहा है। To the extent that man is drawing that way, he points toward what withdraws. As he is pointing that way, man is the pointer. Man here is not first of all man, and then also occasionally someone who points. No, drawn into what withdraws, drawing toward it, and thus pointing it to the withdrawal, man first is man. His essential nature lies in being such a pointer. तो जैसे उस ऑब्जेक्ट का इसेंशियल नेचर है कि वो हमसे टर्न अवे होगा, वो हमसे विथड्रॉ होगा, वैसे ही मैन का भी इसेंशियल नेचर है टू पॉइंट टूवर्ड्स जो हमसे विथड्रॉ हो रहा है। समथिंग विच इन इटसेल्फ बाय इट्स इसेंशियल नेचर इज पॉइंटिंग वी कॉल अ साइन। एज ही ड्रॉज टूवर्ड व्हाट विथड्रॉज, मैन इज अ साइन। तो क्योंकि ये हमारा इसेंशियल नेचर है कि हम उस तरफ पॉइंट कर रहे हैं जिस जो चीज़ हमसे विथड्रॉ कर रही है, यानी कि मैन एक साइन है। But since this sign points toward what draws away, it points not so much at what draws away as into the withdrawal. The sign stays without interpretation. In a draft to one of his hymns, Holden writes, "We are a sign that is not read." He continues with these two lines, "We feel no pain, we almost have lost our tongue in foreign lands." The several drafts of that hymn, besides bearing such titles as the serpent, the sign, the nymph, also include the title Mnemosyne. This Greek word may be translated memory, and since the Greek word is feminine, we break no rules if we translate dame memory. For Hölderlin uses the Greek word mnemosyne as the name of a Titaness. According to the myth, she is the daughter of heaven and earth. Myth means means the telling word. For the Greeks, to tell is to lay bare and make appear, both the appearance and that which has its essence in the appearance, its epiphany. My tone is what has its essence in its telling.
what is apparent in the unconcealedness of its appeal. The mythos is that appeal of foremost and radical concern to all human beings, which makes man think of what appears, what is in being. Logos says the same. Mythos and logos are not, as our concurrent historians of philosophy claim, placed into opposition by philosophy as such. On the contrary, the early Greek thinkers, that is Parmenides, are precisely the ones to use mythos and logos in the same sense. Mythos and logos become separated and opposed only at the point when neither mythos nor logos can keep to its original nature. In Plato's work, this separation has already taken place. Historians and philologists, by virtue of a prejudice which modern rationalism adopted from Platonism, imagine that mythos was destroyed by logos. But nothing religious is ever destroyed by logic, it is destroyed only by the God's withdrawal. So, the myth is what, as it is given here. Myth means the telling word. So, myth is basically whatever story, whatever folk. So, whatever that that piece or the collection of words is what is myth. And mythos is what has its essence in its telling. So, basically, myth has the essence of mythos. Mythos का मतलब कि जिसका essence होता है, जिसका essential nature होता है to tell something. So that is what is mythos. And mythos and logos according to him are the same. कि mythos और logos जो है वो बिल्कुल same है. हालांकि प्लेटो ने इसको distinguish किया है, लेकिन in reality mythos and logos both are same. दोनों ही हमें एक चीज़ की तरफ कुछ बता रहे हैं. तो mythos और logos दोनों का essential nature होता है to tell something. और वो जो चीज़ हमें बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, that is called a myth. तो mythos and logos को हम destroy नहीं कर सकते हैं. वो सिर्फ बाय गॉड्स विथड्रॉल डिस्ट्रॉय होगा. मैन कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट बाय लॉजिक. ये वट एवर दीज फोक टेल्स आर, ये जो मिथ्स हैं, जो एपिक्स हैं, दीज आर ऑल फॉल्स, दीज आर ऑल रॉन्ग, बिकॉज दे हैव द इसेंशियल नेचर ऑफ टेलिंग समथिंग टू अस. तो ह्यूमन्स बाय लॉजिक इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि लॉजिकली इट डज नॉट अपील. Mnemosyne, daughter of heaven and earth, bride of Zeus, in 9 nights becomes the mother of the 9 muses. Drama and music, dance and poetry are of the womb of Mnemosyne, dame Memory. It is plain that the word means something else than merely the psychologically demonstrable ability to read in a mental representation an idea of something which is past. Memory, from Latin memo or mindful, has in mind something that is in the mind, thought. But when it is the name of the mother of the muses, memory does not mean just any thought of anything that can be thought. Memory is the gathering and convergence of thought upon what everywhere demands to be thought about first of all. तो memory का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस हमने हमारी thoughts को collect करके रख लिया है, जैसा उसका साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. मेमोरी का मतलब कि उन थॉट्स को कन्वर्ज करना, आपस में मिला के और उसके ऊपर कुछ बिल्ड करना, वो है एक्चुअली में मेमोरी का मतलब. इट हैज़ मोर टू इट दैन जस्ट द साइकोलॉजिकल डेफिनेशन. मेमोरी इज़ द गैदरिंग ऑफ रिकलेक्शन, थिंकिंग बैक. कि हम मेमोरी का मतलब है कि जो हम ऑलरेडी सोच चुके हैं उसके ऊपर और सोचना, उसके ऊपर उसको और कंसोलिडेट करना, उसको गैदर करना, उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर फाउंडेशंस बनाना. It safely keeps and keeps concealed within it that to which at each given time thought must be given before all else in everything that essentially is, everything that appeals to us what has been and has been in being. Memory, mother of the muses, the thinking back to what is to be thought is the source and ground of poesy. This is why poesy is the water that at times flows backward towards the source, toward thinking as a thinking back, a recollection. Surely, as long as we take the view that logic gives us any information about what thinking is, we shall never be able to think how much all poesy rests upon thinking back. Recollection, poetry, wells up only from devoted thought, thinking back, recollecting. Under the heading Mnemosyne, Holderlin says, we are a sign that is not read. We, who? We, the men of today, of a today that has lasted since long ago and still will still last for a long time, so long that no calendar in history can give its measure. तो वी आर अ साइन दैट इज़ नॉट रेड. हम लोग एक साइन है. साइन का मतलब हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वाई मार्टिन इज सेइंग दैट वी आर अ साइन, बिकॉज वी आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स जो चीज़ हमसे विथड्रॉ हो रही है. एंड जैसे होल्डरलिन ने भी कहा है कि वी आर नॉट रेड, क्योंकि हम लोग उस साइन को अभी तक इंटरप्रेट नहीं कर पाए. एंड वी आर द मैन ऑफ टुडे. और ये टुडे का मतलब अगेन इट्स नॉट द कैलेंडर वाला टुडे कि आज की डेट. टुडे मीन्स कि जो एज हमेशा से चलती आ रही है, दैट वी आर नॉट स्टिल एबल टू इंटरप्रेट इट, और हम अभी तक उसको नहीं कर पाए. सो दैट टाइम मेजरमेंट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग. In the same hymn, Mnemosyne says, long is the time in which we are a sign that is not read.
And this that we are a sign that is not read, does not give enough food for thought. What the poet says in these words and those that follow may have a part in showing us that what is most thought provoking, precisely what the assertion about our thought provoking time attempts to think of. And that assertion, provided only we explain it properly, may throw some little light for us upon the poet's word. Hölderlin's word in turn, because it is a word of poesy, may summon us with a larger appeal and hence greater allure upon a way of thought that tracks in thought what is most thought provoking. Even so, it is as yet obscure what purpose this reference to the words of Hölderlin is supposed to serve. It's still questionable with what right we, by way of an attempt to think, make mention of a poet, this poet in particular, and it is also still unclear about what ground and within what limits our reference to the poetic must remain. सो पोइटिक वीर में होल्डरलिन ने कहा है कि वी आर अ साइन दैट इज़ नॉट रेडी, आज भी वी आर अ साइन जो कि पॉइंट कर रहा है उस चीज़ की तरफ जो कि हमसे विथड्रॉ कर रही है, बट हम लोग हम खुद को इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि हम कैसे वी आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स, हम उससे उस पॉइंटिंग टूवर्ड्स को अभी तक समझ नहीं पाए हैं. इस वजह से वी आर अ साइन दैट इज़ नॉट रेड. और इसी टाइम में, इस टाइम में, जिस टाइम में वो ऑब्जेक्ट हमसे विथड्रॉ कर रहा है, सो दिस इट सेल्फ इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग कि वी आर अ साइन दैट इज़ नॉट रेड. ये इट सेल्फ एक स्टेटमेंट है विच इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग. By way of this series of lectures, we are attempted to learn thinking. The way is long. We dare take only a few steps. If all goes well, they will take us to the foothills of thought. तो हम लोग इस lecture series के through सोचना सीख रहे हैं. बहुत लंबा रास्ता है, but still we are taking step by step. But they will take us to places which we must explore to reach the point where only the leap will help further. तो ये हमें सिर्फ आगे बढ़ा रहा है, स्टेप बाय स्टेप उन जगहों तक ले जा रहा है जिन पॉइंट्स तक हमें पहुंचना ज़रूरी है. The leap alone takes us into the neighborhood where thinking resides. We therefore shall take a few practice leaps right at the start, though we won't notice it at once, nor need to. In contrast to a steady progress where we move unawares from one thing to the next and everything remains alike, the leap takes us abruptly to where everything is different. तो हमने यहाँ पर इन लेक्चर्स के थ्रू एंड वॉट ही सेइंग दैट ही हैज़ टेकन अ लीप, और ये लीप हमें लेना ज़रूरी है. अभी हमने एक बहुत बड़ी लीप ली और इस लीप के बाद ये पढ़ के हमें लग रहा है कि व्हाट इज़ बीइंग सेड अबाउट, ये क्या हो रहा है, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड कम्प्लीटली न्यू फॉर अस. लेकिन ये लीप हमारे लिए लेना ज़रूरी है, तभी हम उस पॉइंट तक पहुँचेंगे, हम थॉट के फुटहिल्स तक पहुँचेंगे. Abrupt means the sudden sheer descent or rise that marks the chasm's edge. Though we may not founder in such a leap, what the leap takes us to will confound us. It is quite in order then that we receive notice from the very start of what will confound us, but all would not be well if the strangeness were due only to the fact that you, the listeners, are not yet listening closely enough. If that were the case, you would be bound to overlook completely the strangeness which lies in the matter itself. The matter of thinking is always confounding, all the more in proportion as we keep clear of prejudice. To keep clear of prejudice, we must be ready and willing to listen. Such readiness allows us to surmount the boundaries in which all customary views are confined and to reach a more open territory. In order to encourage such readiness, I shall send here some traditional remarks which will also apply to all subsequent lectures. तो हमें the traditional thinking of ways से भी हमें beyond जाना पड़ेगा. In university, especially, the danger is still very great that we must understand what we hear of thinking, particularly life in the immediate subject of the discussion is scientific. Is there any place compelling us more forcibly to rack our brains in the research and training institutions pursuing scientific labors? तो बोलिए कि यूनिवर्सिटीज़ में तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में जो हम रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक लेबर्स कर रहे हैं, उसमें तो हमें कितना सोचना पड़ता है, हमें सोचना ही पड़ता है, बट और इसीलिए वो हमें इल्यूजन देता है कि वी आर थिंकिंग, बट रियलिटी में इवन देयर वी आर नॉट थिंकिंग. और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में ये कंडीशन इसलिए इतनी डेंजरस है क्योंकि वहाँ तो सबसे ज़्यादा हमें इल्यूजन मिल रहा है कि हम सोच रहे हैं. Now everyone admits unreservedly that the arts and the sciences are totally different from each other, though in official oratory they are still mentioned jointly. But if a distinction is made between thinking and the sciences and the two are contrasted, that is immediately considered a disparagement of science. There is the fear even that thinking might open hostilities against the sciences and becloud the seriousness and spoil the joy of scientific work. But even if those fears were justified, which is emphatically not the case, it would still be both tactless and tasteless to take a stand against science upon the very rostrum that reserves scientific education. Tact alone ought to prevent all polemics here. But here there is another consideration as well. Any kind of polemics fail from the outset to assume the attitude of thinking. The opponent's role is not the thinking role. Thinking is thinking only when it pursues whatever speaks for a subject. Everything said here defensively is always intended exclusively to protect the subject. When we speak of the sciences as we pursue our way, we shall be speaking not against but for them, for clarity concerning their essential nature.
तो यूनिवर्सिटीज़ में तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में तो हमें और भी ज़्यादा लग रहा है कि हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग, जो हम स्टडीज़ कर रहे हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट। एंड शुरुआत से दिस हैज़ बीन सेड, नॉट शुरुआत से, बट येस, दिस हैज़ बीन सेड दैट साइंसेज एंड आर्ट्स आर डिफरेंट, बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर सेम, जॉइंटली दे आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन स्टिल साइंसेज एंड आर्ट्स, इफ वी आर कंसिडरिंग देम डिफरेंट, तो साइंस एंड थिंकिंग के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इट इज़ अ वेरी शॉकिंग डिफरेंस, बिकॉज हमें लगता नहीं है, हर किसी को जो साइंस पढ़ रहा है उन्हें यही लगता है कि साइंस और थिंकिंग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। टू स्टडी साइंस मीन्स टू थिंक, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। दिस अलोन इम्प्लाइज आर कन्विक्शन दैट द साइंसेज आर इन देमसेल्व्स पॉजिटिवली इसेंशियल। तो दो हम साइंसेज में सोच नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है दैट साइंसेज आर नॉट इसेंशियल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू थिंकिंग। However, their essence is frankly of a different sort from what our universities today still fondly imagine it to be. तो जैसे साइंसेस को हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, एक्चुअली में साइंस वैसा नहीं है और हमें साइंस को वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। साइंस इज़ टू बी लर्नड एंड थॉट इन अ वेरी डिफरेंट वे, जैसा हमको यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है उसके कंपैरिजन में। In any case, we still seem afraid of facing the exciting fact that today's science belongs in the realm of the essence of modern technology and nowhere else. Be it noted that I am saying in the realm of the essence of technology and not simply in technology. A fog still surrounds the sense of modern science. So, modern science हमें लगता है कि it is placed in the technology, but it is not, and that is why Martin is बहुत ही इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, या फिर इट इज़ प्लेस्ड इन द रियल्म ऑफ द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि वो उसके आसपास है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट थिंग। एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके आसपास है, उसी के रियल्म में है। The fog, however, is not produced by individual investigators and scholars in the sciences. It is not produced by man at all. It arises from the region of what is most thought-provoking, that we are still not thinking, none of us, including me who speaks to you, me first of all. तो अब ये जो हमारा confusion है, या ये जो फॉग है कि मॉडर्न साइंस के आसपास कि वी आर नॉट डूइंग इट द करेक्ट वे, ये मैन के कारण नहीं है, इसमें मैन का कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट ह्यूमन जिसने साइंस को आज नॉट प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, इसमें ह्यूमन का कोई लेना देना नहीं है, बट ये उसका इसेंशियल नेचर, और ये इस वजह से क्योंकि हम वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ व्हाट इज़ द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग, इस वजह से। एंड सबसे ज़्यादा तो वो खुद जो हमें ये बात बता रहे हैं, उन्हें खुद को अभी तक प्रॉपरली सोचना नहीं आया है। ही हिमसेल्फ does not know how to think. This is why we are here attempting to learn thinking. We are all on the way together and are not reproving each other. To learn means to make everything we do answer to whatever essentials address themselves to us at any given time. Depending on the kind of essentials, depending on the realm from which they address us, the answer and with it, the kind of learning differs. A cabinet maker's apprentice, someone who is learning to build cabinets and the like, will serve as an example. His learning is not mere practice to gain facility in the use of tools, nor does he merely gather knowledge about the customary forms of the things he is to build. If he is to become a true cabinet maker, he makes himself answer and respond above all to the different kinds of wood and to the shapes slumbering within wood, to wood as it enters into man's dwelling with all the hidden riches of its nature. In fact, this relatedness to wood is what maintains the whole craft. Without that relatedness, the craft will never be anything but empty busy work, any occupation with which will be determined exclusively by business concerns. Every handicraft, all human dealings are constantly in that danger. The writing of poetry is no more exempt from it than is thinking. तो अब लर्निंग भी आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लर्निंग का मतलब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया कि कैबिनेट मेकर है जो ड्रॉर शेल्स कैबिनेट्स बनाते हैं, तो भाई कैबिनेट मेकर के लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो टूल्स को यूज़ करना सीख ले या फिर उसकी प्रैक्टिसेस सीख ले, उसको सीखना होगा टू रिलेट टू द वुड, उसको उस लकड़ी से रिलेट करना होगा, उस लकड़ी की प्रॉपर्टीज़ को सीखना होगा कि वो लकड़ी कहाँ से कैसे कर्व होती है, उस पर कितना प्रेशर डालो तो हाउ विल इट चेंज, हाउ विल इट बी डिफरेंट, किस टाइप के टूल से कैसे, सो दैट इज़ व्हेन ही विल बी एबल टू अचीव उनके प्रोफेशन में। सो लर्निंग डिफर्स, लर्निंग भी अलग अलग है। हम जो सीख रहे हैं, जो इस लर्निंग की बात कर रहे हैं, वो लर्निंग भी अलग अलग डिफ़र करती है हर क्राफ्ट के साथ, हर साइंस के साथ, हर डिफरेंट स्किल के साथ। Whether or not a cabinet maker's apprentice while he is learning will come to respond to wooden things depends obviously on the presence of some teacher who can make the apprentice comprehend. True, teaching is even more difficult than learning. We know that, but we rarely think about it. अब teaching तो learning से भी ज़्यादा difficult है।
And why is teaching more difficult? Not because the teacher must have a larger store of information and have it always ready. तो टीचिंग इसीलिए डिफिकल्ट नहीं है कि भाई टीचर को हम हमेशा स्टूडेंट से ज़्यादा पता होना चाहिए और हमेशा उसको मतलब किसी भी मोमेंट पे पता होना चाहिए ताकि उससे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन की जाए तो वो उसको कॉम्प्रीहेंड करके उसको एक्सप्लेन कर सके. दैट इज़ वाई नॉट टीचिंग इज़ मोर डिफिकल्ट. Teaching is more difficult than learning because what teaching calls for is this, to let learn. टीचिंग और लर्निंग से ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि सबसे पहले तो हमें अभी तक प्रॉपरली लर्न करना ही नहीं आता है और टीचिंग में तो हमें सबसे ज़्यादा पहले सिखाना होता है टू लेट लर्न. हमें उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, उन्हें कुछ सिखाना नहीं है, पर हमें उनको ये सिखाना है कि वो सीखना सीखे. द रियल टीचर इन फैक्ट लेट्स नथिंग एल्स टू बी लर्न दैन लर्निंग. तो जो रियल टीचर है ना वो कुछ भी और नहीं सिखाता है, वो यही सिखाता है कि हाउ टू लर्न, वो सीखना सिखाते हैं. His conduct therefore often produces the impression that we properly learn nothing from him if by learning we now suddenly understand merely the procurement of useful information. The teacher is ahead of his apprentices in this alone, that he has still far more to learn than they has to learn to let them learn. The teacher must be capable of being more teachable than the apprentices. The teacher is far less assured of his ground than those who learn are of theirs. If the relation between the teacher and the taught is genuine, therefore there is never a place in it for the authority of the know-it-all or the authoritative sway of the official. It still is an exalted matter then to become a teacher, which is something also entirely than becoming a famous professor. That nobody wants any longer to become a teacher today, when all things are downgraded and graded from below, for instance, from business, is presumably because the matter is exalted because of this altitude, and presumably this disinclination is linked to that most thought-provoking matter which gives us to think. We must keep our eyes fixed firmly on the true relation between teacher and taught, if indeed learning is to arise in the course of these lecture. तो टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि बस एक टीचर है जिसे बहुत सारा पता है, स्टूडेंट के कंपैरिजन में उसको बहुत सारा पता है और वो बस उसको दे रहा है. टीचिंग का मतलब है कि अ गुड टीचर और टू टीच मतलब टू लेट लर्न, कि आप उसको कुछ और नहीं सिखा रहे हो, कोई और सब्जेक्ट स्किल, यू आर टीचिंग नथिंग बट यू आर टीचिंग आपके स्टूडेंट को हाउ टू लर्न. वी आर ट्राइंग एंड टुडे तो इट इज़ इवन मोर, क्योंकि आज के टाइम में टीचिंग इज़ नॉट कंसिडर दैट गुड. इनफैक्ट टुडेज टाइम्स में बिजनेस इज़ अबव ऑल बिकॉज बिजनेस अर्न्स मनी. सो दिस प्रोफेशन इज़ इवन मोर इन वी कैन से काइंड ऑफ अ डेंजर और एग्जॉल्ट हो चुका ही है आज के कॉमन टाइम्स से. We are trying to learn thinking. Perhaps thinking too is just something like building a cabinet. At any rate, it is a craft, a handicraft. Craft literally means the strength and skill in our hands. The hand is a peculiar thing. In the common view, the hand is part of our bodily organism. But the hand's essence can never be determined or explained by its being an organ which can grasp. Apes too have organs that can grasp, but they do not have hands. The hand is infinitely different from all grasping organs. Paws, claws, or fangs different by an abyss of a sense. Only a being who can speak, that is, think, can have hands and can be handy in achieving works of handicraft. But the craft of the hand is richer than we commonly imagine. The hand does not only grasp and catch or push and pull, the hand reaches and extends, receives and welcomes and not just things. The hand extends itself and receives its own welcome in the hands of others. तो जैसे एक हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट का सिंपल मतलब नहीं होता कि कुछ तोड़ा जोड़ा बनाया, टूल से उसको शेप दिया, नो, बट इट इज़ मोर देन दैट. एक हैंडीक्राफ्ट मतलब कि crafts or things that we do by hands. Craft is basically a skill. तो handicraft मतलब कि skill that we practice by hands. तो एक handicraft is not just कि okay we कोई भी कुछ चीज़ है और हमने उसको tools का use करके and we made something out of it. That is not just handicraft. But handicraft में और चीज़ें, the hand extends itself, it receives something, it बहुत सारी और चीज़ें होती है. The hand carries, the hand holds, the hand designs and signs, presumably because man is a sign. Two hands fold into one, a gesture meant to carry man into the great oneness. The shaking of hands. So this is, all of these are handicrafts. The shaking of hands, मतलब ये this is, the oneness or the togetherness, shows togetherness. The hand is all this and this is the true handicraft. Everything is rooted here that is commonly known as handicraft, and commonly we go no further. But the hand's gestures run everywhere through language in their most perfect purity, precisely when man speaks by being silent. And only when man speaks does he think, not the other way round, as metaphysics still believes. So only when man speaks does he think. जब वो बोलता है तभी वो सोचता है, एज मेटाफिजिक्स का मानना है.
Every motion of the hand and every one of its works carries itself through the element of thinking. Every bearing of the hand bears itself in that element. तो जैसे जब हम सोचते हैं, जब हम बोलते हैं तभी सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू मेटाफिजिक्स जैसे ये है, उसी तरीके से जब हम वी आर इंडल्जिंग और इन एनी ऑफ दी हैंडीक्राफ्ट्स का सिर्फ मतलब इज़ नॉट आर्ट, पेंटिंग और कैबिनेट मेकिंग, कारपेंट्री, नो, बट हैंडीक्राफ्ट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो अभी हमने डिस्कस किया. इवन द सिंपल एक्टिविटी ऑफ शेकिंग अ हैंड एक हैंडीक्राफ्ट का पार्ट है, बिकॉज वो लीड करता है टू टुगेदरनेस, टू वननेस, टू पार्टनरशिप. ऑल द वर्क ऑफ द हैंड इज रूटेड इन थिंकिंग. देयरफॉर तो जब हम हाथ का यूज़ करते हैं, दैट इज अगेन व्हेन वी आर थिंकिंग. देयरफॉर थिंकिंग इटसेल्फ इज मैन्स सिंपलेस्ट and for that reason hardest handiwork if it would be accomplished at its proper time. We must learn thinking because our being able to think and even gifted for it, it's still no guarantee that we are capable of thinking. To be capable, we must before all else incline toward that addresses itself to thought, and that is what which of itself gives food for thought. What gives us this gift, the gift of what must properly be thought about, is what we call most thought-provoking. Our answer to the question what the most thought-provoking thing might be is the assertion most thought-provoking for our thought-provoking time is that we are still not thinking. The reason is never exclusively or primarily that we men do not sufficiently reach out and turn toward what properly gives food for thought. The reason is that this most thought-provoking thing turns away from us, in fact has long since turned away from man. And what withdraws in such a manner keeps and develops its own incomparable nearness. So that again same thing is repeated कि जो ये most thought-provoking चीज़ है ये man से withdraw होता है और इसके बारे में सोचना ही will give us food for thought. Once we are so related and drawn to what withdraws, we are drawn into what withdraws, into the enigmatic and therefore mutable nearness of its appeal. तो एक बार हम उस तरफ हम जाएंगे जो चीज़ हमसे विड्रॉ कर रही है, हम उसके बारे में और समझेंगे. Whenever man is properly drawing that way, he is thinking. तो जब हम उन चीज़ के बारे में उस चीज़ की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, उस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करें, तब तक हम लोग सोच रहे हैं. इवन दो ही मे स्टिल बी फार अवे फ्रॉम वॉट विड्रॉ. तो भले हम उस चीज़ से, उस ऑब्जेक्ट से, जो उस ट्रूथ से या जो भी चीज़ है जो हमसे विड्रॉ करी उससे बहुत दूर है, स्टिल हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग सोच रहे हैं. Even though withdrawal may remain as veiled as ever. All through his life and right into his death, Socrates did nothing else and placed himself into this draft, this current, and maintained himself in it. This is why he is the purest thinker of the West. तो Socrates ने यही किया. जो रियलिटी है जो हमसे विथड्रॉ हो रही है वो उसकी तरफ ही आगे बढ़ते गए, पॉइंट आउट करते गए. सो मे बी वो सोक्रेटिस बहुत उससे दूर थे, बट स्टिल ही वॉज थिंकिंग, और दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू मार्टिन ही वॉज द प्योरेस्ट थिंकर ऑफ ऑल of the West. This is why he wrote nothing. For anyone who begins to write out of thoughtfulness must inevitably be like those people who run to seek refuge from any draft too strong for them. इसलिए सोक्रेटिस ने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि कुछ लिख लेना मतलब उस चीज़ में रिफ्यूज ले लेना, बिकॉज वो you cannot bear the strength of it. As yet hidden history still keeps the secret why all great Western thinkers after Socrates with all their greatness had to be such fugitives. तो सोक्रेटिस के बाद ऑल दीज वेस्टर्न थिंकर्स वर नथिंग बट फ्यूजिटिव्स, जिन्होंने राइटिंग में अपने आप रिफ्यूज लिया, अपनी प्रोटेक्शन लिया. Thinking has entered into literature, and literature had decided the fate of Western science, which by way of doctrine of the Middle Ages became the science of modern times. In this form, all the sciences have left from the womb of philosophy in a twofold manner. तो थिंकिंग आया लिटरेचर में, लिटरेचर से आया वेस्टर्न साइंस. तो इसी तरीके से साइंसेस जो है वो सभी फ़िलॉसफी से ही निकल कर आए, क्योंकि फ़िलॉसफी मतलब थिंकिंग, थिंकिंग से आया लिटरेचर, लिटरेचर से आया वेस्टर्न साइंस. The sciences come out of philosophy because they have to part with her, and now that they are so part, they can never again by their own power as sciences make the leap back into the source from whence they have sprung. Henceforth, they are remanded into a realm of being where only thinking can find them, provided thinking is capable of doing what it is own to do. When man is drawing into what withdraws, he points into what withdraws. As we are drawing that way, we are assigning a pointer, but we are pointing then at something which is not yet been transposed into the language of a speech. We are a sign that is not read. The same thing जो अभी तक हमने discuss किया, the same, exact same thing. In his draft for the hymn, Nemusin Hölderlin says, we are a sign that is not read. We feel no pain. We almost have lost our tongue in foreign lands. And so on our way toward thinking, we hear a word of poesy. But the question to what end and with what right, upon what ground and within what limits our attempt to think allows itself to get involved in dialogue with poetry, let alone with the poetry of this poet, this question which is inescapable, we can discuss only after we ourselves have taken the path of thinking. तो हम इस चीज़ के बारे में जो होल्डरली ने कहा है, इसके बारे में हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब हम खुद उस थिंकिंग का एक पार्ट ले रहे हैं, उस थिंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं.